we need to know more about classification. What is classification? Classification is the process by which organism is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. What is classification? When we need to classify the living organism for our convenient, for our easy to know about the organisms. Why? सो दैट हमें आसानी से हम क्लासीफाई करके वेनेवर वी नीड तो हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें. सो ये एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की जाती है इनको कॉन्वीनियंट कैटेगरीज में उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखते हुए. द कैरेक्टर्स दैट वी ऑब्जर्व आर द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आफ्टर ऑब्जर्वेशन ओनली will be able to classify the living organism, or in other word we can say it is a process by which we can keep the different plants and animals into different groups on the basis of their similarities and differences. अगर similar है तो एक से group में, अगर different है तो different group में. So this is basically for our convenience. Whenever we want to know about a particular organism, it would be easy for us to get information related with that particular organism. Now let us talk about dog, cat. अगर हम डॉग और कैट की बात करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स क्या देखते हैं हमें. 4 limbs, 2 eyes, ears and nose etc. But if we talk about mammals, then what is the main characteristic of mammal? External ears, body hairs, mammary gland, and mammals can give birth to babies. So these are the characters of mammals. अब ये characters जिस भी organism में होगा वो सारे किस में आएंगे? Mammals के अंदर आएंगे. क्या characters? External ears, body hairs, and giving birth to baby, mammary gland etc. Now let us move towards plants. Wheat and rice. Wheat और rice को अगर हम देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? These are herbs and seeds are grown on their top. So ये wheat और rice का है तो wheat is different, rice is different, but externally उसके features से हम recognize करते हैं. But अगर एक common feature लें तो monocotyledons. What are monocotyledons? The seeds which are having single cotyledon are known as monocotyledon. If we talk about wheat and rice, these are monocotyledonous. Single cotyledon होता है इसके अंदर. तो ये जो सारी चीज़ें all these are making taxas, different steps to classify living organism, है ना. अलग अलग टैक्सा में आते हैं ये सारे. मैमल्स अलग टैक्सा में आएगा, कॉटिलेडन अलग टैक्सा में आएगा, देन अगेन वीट राइस अलग टैक्सास में आएंगे, डॉग एंड कैट अलग टैक्सास. तो क्या है ये टैक्सा? दिस वी नीड टू डिस्कस मोर अबाउट ऑल दिस टैक्सा. These are basically the steps of classification, hierarchy of classification, the different taxon, which are actually found in 7 steps. So we'll discuss more about the taxon.